Today the theme of the panel discussion which Mitchell has just informed of dengue. So you can just imagine how many people are getting dengue in a year. I think Goodnight as a brand has been at the forefront of fighting vector-borne diseases in India over the last several decades. Godrej itself is a 127-year-old company, and we pride ourselves in innovative products. That is at the heart of our DNA, and Goodnight is one of our biggest brands in Godrej. Let me tell you. And in the recent past, what's happened is that there have been a lot of illegal dosed on mainly into incense sticks but also onto coils. These Chinese actives are very efficacious. We need the next generation of safe and efficacious molecules. And with extensive research, and this is something we're very, very proud of, because and that's why we've done such a large press conference. We don't do it for every one of our launches, because this is just not, so it's been a partnership between Godrej and the molecule patent holder, which is a company called Shogun, and we've got exclusivity on stage. You nudged and spoke about the breakthrough innovation Renofluthrin. The number of scientists working on vector-borne diseases amazed me, the technologies they're working on. But one number stood out. They said that dengue, globally, they believe 300 million cases of dengue happen in a year. India alone has 30 million cases. Now, our official statistics are 300,000 cases, which means that the undetected cases, like in the case of many viruses, is 100 times what it actually is. That's the kind of prevalence, and dengue is life-threatening. So, mosquitoes provide, all sorts of illnesses that come, and mosquitoes are a particularly dangerous insect for the human species. So I spoke to you about dengue. 300,000 cases is what. Meanwhile, let me tell you, while we demonstrate, seeing is believing. to Sir Godrej for innovating this product from the public health department. Completely agree with you. A blockbuster molecule it could be, because it has after effects as well, and it is 2 times faster and safe as well. So thank you, Dr. Pawar. And your comments on this, Dr. Samir, please. What you said, and I said that earlier as well. I think we have to promote indigenous research. What works best for our people, what is safest for our people. I think just importing things which may be from countries which are giving us something which is probably cheaper or something, if the safety profile is not treated, I am very uncomfortable prescribing it for my patients, because at the end of the day I will be responsible for it. So I think considering the safety profile, I will be very happy with this molecule. Get your videos. I'll then invite the panel for a photo op. Can I request you guys to please come up on stage?
मलेरिया डेंगू की जो बीमारियां हैं वो हम देख रहे हैं फैल रहे हैं बच्चों में भी, बड़ों में भी, सभी में। और उसका एक कारण है कि मलेरिया या मस्कीटो ब्रीडिंग ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और ये कोई बारिश के सीज़न से या मौसम से रिलेटेड नहीं रहा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि पानी जो कलेक्टेड वाटर होता है या जो स्टैग्नेंट वाटर होता है वो हर जगह स्प्रेड हो रहा है। तो कंस्ट्रक्शन साइट्स हो या घर में हम कोई ब्रोकन वेसल्स हो या ब्रोकन बॉटल्स हो, उसमें भी पानी जमता है। तो इसके वजह से ये प्रॉब्लम बढ़ रहा है। आज जो हम देख रहे हैं कि हमें देखना है कि घर के अंदर बच्चों को और बड़े लोगों को मस्कीटो बाइट से सेफ कैसा रखना चाहिए, और उसके लिए जो रेपेलेंट की बात आज कर रहे हैं वो सेफ होना चाहिए, इफेक्टिव भी होना चाहिए, असरदार भी होना चाहिए और सेफ भी होना चाहिए। और इसलिए ये जो प्रोडक्ट है वो हमें सोचना चाहिए, हमें वो यूज़ करना चाहिए। सर, आज आपने जो प्रोडक्ट लॉन्च किया है उसकी खासियत क्या है और किस तरीके का उसके उपाय उपयोग किया जाता है? उसकी 2-3 खासियत है। एक तो ये बहुत असरदार है मच्छरों को मारने में। दूसरी बात ये है कि ये सेफ़ है। सेफ्टी प्रोफाइल मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखता है। तीसरी चीज़ उन्होंने ये भी बताया कि ये ऑफ करने के बाद भी 2 या 3 घंटे असरदार रहता है, क्योंकि हम देखते हैं कि हिंदुस्तान में बहुत जगह बिजली का भी प्रॉब्लम है, पावर शॉर्टेज होती है। तो ऐसा ना हो कि तुरंत वो बंद करने के तुरंत बाद फिर से प्रॉब्लम शुरू हो जाए। तो इसलिए मुझे लगता है ये अच्छा प्रोडक्ट है।